Bismillahirrahmanirrahim. Dear friends, today we are going to start the Know Your Word book of class 5. We are going to start the unit 1, which is citizenship. Citizenship. You have read this concept of citizenship in class 4 as well, and we will revise it and we will improve it further, right? First of all, citizenship and digital citizenship. Here we will discuss कि citizenship क्या होती है and what is a digital citizenship, right? Citizens are legally recognized inhabitants of a particular country. Inhabitants जो होता है वो रहने वाले, किसी एक जगह के रहने वालों को बोलते हैं. यानी citizens are legally recognized inhabitants of a particular country. यानी एक किसी मुल्क के कानून के मुताबिक उधर जो लोग रह रहे हैं वो उस मुल्क के सिटीजन्स कहलाते हैं. ठीक है जी. अ ग्रुप ऑफ सिटीजन्स फ्रॉम अ कम्युनिटी आर लेड बाय लीडर टुवर्ड्स अ कॉमन गोल. एक कम्युनिटी का या एक ग्रुप ऑफ सिटीजन का एक लीडर होता है जो उस कम्युनिटी या उस ग्रुप को उनका एक मुश्तरका जो एक नज़रिया होता है उसको लेके आगे बढ़ता है या आगे बढ़ाता है. A leader is someone who represents and takes responsibility of a particular community. एक रहनुमा या एक लीडर क्या होता है कि वो एक कोई जो भी कम्युनिटी होती है, एक ख़ास कम्युनिटी जो होती है उसकी जिम्मेदारी लेता है और उसकी बिहाफ पे बात करता है. He or she is a prominent, respected and active member of the community who works for its progress and well-being. आम तौर पे जो लीडर होते हैं वो एक मशहूर लोग होते हैं और रिस्पेक्टेड होते हैं और वो उस कम्युनिटी के एक मुतहर्रिक कारकुन होते हैं. ठीक है, यानी काम काज करने वाले, उस कम्युनिटी की वेलफेयर के काम काज करने वाले होते हैं. अब हम आते हैं सिविक राइट्स की तरफ. व्हाट आर civic rights? As citizen of our country, we enjoy certain civic and political rights which have been granted by the Constitution. देखिए, आपने पिछले क्लास में पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है. कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है एक ग्रुप ऑफ रूल्स होता है जिसके तहत एक कंट्री जो है चलाया जाता है. या वी कैन से दैट ए कॉन्स्टिट्यूशन इज a set of rules according to which the company and affairs of a country are run, right? So as citizens of our country, we have some civic and political rights जो कि हमें किस तरह मिलते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इट इज़ रिटन दैट वी हैव ऑल द सिटीजन्स हैव दीज राइट्स. सम ऑफ दीज आर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, right to assemble peacefully to express common opinion and achieve common goals, security of one's dignity, right to fair trial, right to vote, freedom to practice religion, protection of life and property, and equality of all citizens. यानी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा हुआ है कि हमारे जो बेसिक राइट्स हैं जो कि हर शख्स को मिलते हैं और हर शख्स को मिलने चाहिए, वो क्या हैं कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कि ही शुड बी अलाउड टू मूव एनीवेयर इन द कंट्री, राइट टू असेंबल पीसफुली टू एक्सप्रेस कॉमन ओपिनियन एंड अचीव कॉमन गोल्स, कि एवरी सिटीजन शुड बी अलाउड टू हैव one or more citizens should be allowed to get together and express their opinion and talk about what they think of certain things. यानी उनको आज़ादी होनी चाहिए कि वो किसी चीज़ के बारे में अपनी राय बयान कर सकें. सिक्योरिटी ऑफ वंस डिग्निटीज़, कि उनकी इज़्ज़त की हिफाजत की जाए. राइट टू अ फेयर ट्रायल, अगर उन पर कोई किसी किस्म का उन पर इल्ज़ाम लगे तो उनके लिए उनको इस बात की आज़ादी होनी चाहिए कि उनके बाकायदा एक बिल्कुल फेयर किस्म का जो है ना उनके साथ उन पर मुकदमा किया जाए या मुकदमे के मुताबिक मुकदमे में वो आके अपनी सफाई पेश कर सकें. ठीक है जी. राइट टू वोट, उनको ये हक हासिल होता है कि वो अपना वोट दे सकें जिस भी लीडर को चाहें. फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन,
हर सिटीज़न को ये आज़ादी हासिल होती है कि वो अपने मज़हब पर अमल कर सके। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, उनकी जो ज़िंदगी है और उनकी जायदाद जो है, जो भी जायदाद है, गाड़ी है या घर है, उसकी प्रोटेक्शन जो है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। ठीक है। इक्वलिटी ऑफ ऑल सिटीजन, तमाम सिटीजन को बराबरी के हकूक़ होने चाहिए। राइट्स ऑलवेज कम विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो राइट्स हैं उनके, जब किसी को राइट्स मिलते हैं तो उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बन जाती हैं। देयर फोर इन ए रिटर्न citizen is expected to perform certain actions and behave in a certain manner to maintain a just and peaceful society। यानी जो सिटीजन्स होते हैं ना, उनको हकूक़ तो मिलते हैं, मगर हकूक़ जो है उसके साथ साथ उनको कुछ ज़िम्मेदारियां भी बन जाती हैं। अगर किसी को कुछ चीज़ का हक मिलता है तो उसकी ज़िम्मेदारियां भी कुछ बन जाती हैं। और उन ज़िम्मेदारियों में ये होता है कि जी उनसे तवक्को की जाती है कि कुछ चीज़ों में या कुछ मामलात में वो बिल्कुल इंसाफ के साथ और अमन के साथ सोसाइटी के बीच में रहें। ठीक है जी। सो मैं दोबारा पढ़ता हूँ। राइट्स ऑलवेज कम विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, देयर फोर इन रिटर्न अ सिटीजन इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म सर्टन एक्शंस एंड बिहेव इन अ सर्टन मैनर टू मेंटेन अ जस्ट एंड पीसफुल सोसाइटी। ये भी एक आपके लिए टिप भी दिया गया है कि डू यू नो ए ग्रुप ऑफ पीपल विद इन अ स्पेसिफिक एरिया हु लिव और वर्क टुगेदर इज कॉल्ड अ कम्युनिटी। कम्युनिटी की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, आप लोगों ने लास्ट उसमें पढ़ी थी बुक में कि व्हाट इज़ कम्युनिटी। कम्युनिटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल विद इन अ स्पेसिफिक एरिया हु लिव और वर्क टुगेदर इज़ कॉल्ड अ कम्युनिटी। कम्युनिटी अगर आपको याद हो तो आप लोगों ने साइंस के और इंग्लिश के लेक्चर्स में भी पढ़ा हुआ है कि जी जो आपकी जो फूड चेन्स के बीच में कम्युनिटीज़ होती हैं, कम्युनिटीज़ वही होती हैं जो एक ही तरह के लोग होते हैं और एक ख़ास जगह पर काम कर रहे हो, जहाँ एक ही तरह के जानवर होते हैं या जानदार होते हैं जो ख़ास जगह पर रह रहे होते हैं। इसी तरह इंसान भी, इंसानों की कम्युनिटी भी यही होती है कि ए ग्रुप ऑफ पीपल विद इन अ स्पेसिफिक एरिया हु लिव और वर्क टुगेदर इज़ कॉल्ड अ कम्युनिटी। The members of a community share common values, beliefs और behaviors। इंसानों में और जानवरों में ये फ़र्क होता है कि इंसान जो है वो एक किस्म की जो इखलाकियात हैं और जो तसव्वुरात हैं उनके, या उनके जो दूसरे लोगों के साथ बर्ताव है, वो भी यकीन करते हैं इस बात पे कि जी सब एक ही जैसा सबका जो है रवैया हो, किस चीज़ में, कि इखलाकियात बरतने में और बाकी मामलात में उनका रवैया एक जैसा हो। इंसानों में और जानवरों में ये चीज़ बहुत फ़र्क है। ठीक है जी। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अब हम आते हैं सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ। हमने पहले राइट्स पढ़े हैं, अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एवरी सिटीजन हैज़ ए राइट टू बी प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट। दिस along with many other rights demand that in return citizens play their part in the formation of a harmonious society। हारमोनियस सोसाइटी का मतलब होता है एक पुरसकून सी सोसाइटी जिसमें हारमनी हो, पीस हो। ठीक है। तो हर शहरी के पास जो है ना वो उसको उसका ये हक है कि जिस रियासत उसकी हिफाजत करे, मगर उसके साथ रियासत उससे ये तवक्को करती है कि वो सोसाइटी को बनाने में भी अपना किरदार अदा करे। राइट। A good citizen is a productive, responsible, caring and contributing member of a society। What are the qualities of a citizen? कि he is productive, he is responsible, caring and he contributes towards the society। Some civic and political responsibilities are to show commitment to democracy by casting a vote, being tolerant of other people's view and accepting the rule of law, to show discipline on the roads by following the traffic rules, observing punctuality, being aware of social problems and to work towards solving them, to give honest statement of witness under law, to obey the law। ये आपने लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में भी पढ़ी हैं, इनको दोबारा दोहराया जा रहा है कि एज ए आपके सिविक जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं एज ए सिटीज़न। कि आपका सबसे पहले आपने बताया कि जी आपको वोट जो है ना, जब भी आप लोगों के चुनाव हो लीडर्स का तो आपको वोट देना चाहिए। फिर आपको टॉलरेंट होना चाहिए, लोग दूसरे लोगों की जो है ना राय को बर्दाश्त करना चाहिए।
उसके बाद आपको डिसिप्लिन शो करना चाहिए रोड्स वगैरह पे, और ताकि ट्रैफिक रूल्स वगैरह को, ताकि एक्सीडेंट्स ना हो और जो है ना दूसरे लोग परेशान ना हो। फिर पंक्चुअलिटी होनी चाहिए कि आप में, आपको बकायदा पंक्चुअल होना चाहिए, किसी भी काम जो आपको मिले उसमें आपको ज़िम्मेदारी शो करनी चाहिए। ठीक है, बीइंग अवेयर ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स एंड वर्क टुवर्ड्स सॉल्विंग देंगे, और आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारे मुल्क के मसाइल क्या हैं और आपने उनको हल करने की कोशिश करनी है। ठीक है जी। टू ओबे द लॉ, और जो मुल्क के कवानीन हैं उन पे आपको उनकी आपको तामील करनी चाहिए, ओबे करना चाहिए, राइट। ये तो हो गई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच यू हैव रेड इन क्लास 4 ऑल्सो, एंड बट दिस इज अ रिवीन ऑल्सो, बट यू मस्ट नो दैट वट आर दी civic and political responsibilities of a citizen, right? Citizens should work with community, with unity and cooperation, look after each other and represent each other's rights. Good citizens undertake volunteer work for the benefit of others. They keep their homes and neighbors clean, right? Citizens should work with unity and cooperation, right? Look after each other, they should look after each other and respect each other's rights. If I'll respect somebody else's right, he will also respect my rights. So we should respect each other's rights. Good citizens undertake volunteer work for the benefit of others. Uh, who will be a good citizen? Who will be a volunteer to take the undertake the work which benefits the community? They keep their homes and neighborhood clean. Good citizens, they always keep their homes as well as their areas around their homes clean. Civic rights and responsibilities may change from time to time and from one country to another. There are some certain civic rights which may change from one country to another country. Different countries may have different concepts of the civic rights, right? Sometimes they change due to changes in social and political environment. Because of some political changes or the system of politics somewhere, or the political environment somewhere, these civic rights may vary or they can be different from one country to another country. Women did not participate in political decisions making for a long time. In the past days, the women were not allowed to participate in political decisions, right? पहले औरतों को आज़ादी नहीं थी कि वो सियासत में हिस्सा ले सकें. Consistent and organized efforts helped them get the right to vote first in Britain in 1918. 1918 में सबसे पहले जो है ना बरतानिया में उनको इजाज़त मिली कि वो अपना वोट डाल सका करें. The Dutch followed this example by extending the right to vote for women in 1919, soon followed by America in 1920. तो डच जो हैं उन्होंने 1919 में अलाउ कर दिया औरतों को कि जी वो भी वोट डाल सकती हैं, और 1920 में जो क्या है अमेरिका ने भी अलाउ कर दिया. ठीक हो गया जी. डिजिटल सिटीजनशिप, ये तो हमने अभी पहले पढ़ लिए कि राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ citizens, right? Now we come to this topic, what is digital citizenship. uh, I'm sorry, first of all, we should before going to digital citizenship, we should read this important thing. Do you know women in Pakistan were given the right to vote in 1947? It was later reaffirmed in the constitution. In Pakistan, the moment Pakistan came into being, we allowed the women to participate in the elections, and we gave them the right to vote. Okay. People using technology such as computers, internet, and other digital devices to interact with each other, which with other users, are called digital citizens. आपने ये थोड़ा सा पहले भी पढ़ा था पिछली क्लास में कि वो डिजिटल सिटीजन. जब आप चले जाते हैं इस पे इंटरनेट पे, तो वहाँ पर भी आप एक किस्म के उधर के, क्योंकि कम्युनिटी है नेट की, उसमें आप एक इंडिविजुअल हैं, तो आप उसमें आपकी वो डिजिटल सिटीजनशिप बन जाती है. Digital citizens must know how to interact with others on the internet. So आप अगर जब नेट पे जाते हैं और आप यू बिकम अ डिजिटल सिटीजन, देन यू शुड नो के हाउ टू इंटरेक्ट विद अदर्स ऑन द इंटरनेट. समटाइम्स डिफरेंस इन ओपिनियन माइट बी फेस्ड. बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि आपको लोगों से, दूसरों से उनको इख्तिलाफ़ राय, उनकी राय मुख्तलिफ होती है किसी चीज़ के बारे में.
In such situations, digital citizens should show tolerance and avoid getting into a argument. The way people should do here, they are not, if not they are digital, even if they are not digital citizens, they should not uh, argue with others unnecessarily, and they should tolerate the opinions of others. In the same way, once you are on internet, you should tolerate the difference of opinion from others, right? They are expected to manage themselves ethically. Ethically का मतलब होता है ethics जो होते हैं, आदाब होते हैं, कुछ जो है ना ज़वाबित होते हैं, ethics उनको बोला जाता है. So they are expected to manage themselves ethically, and they should show, or they should behave ethically once they are on the internet. Okay. Ethics of being online. जब once you are online, or once you're using the internet, what are the ethics that you must follow? First is managing time. Cyber citizens must manage their time between studies, course, and time being spent online. It's very easy to spend hours using the internet, but that is not a good habit. Discipline must be followed. So, the first thing is that you should not use more than you should, rather I'll say that you should not use too much time on the internet. You must use internet, you must take benefit of internet, but it's not that you should be stuck with the internet. जैसे बच्चे भी जाते हैं और जाते ही जो है मोबाइल पे या इंटरनेट उस पे लैपटॉप पे बैठ के या टैबलेट पे बैठ के सारा वक्त अपना टाइम ज़ाया करते रहते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करना छोड़ देते हैं, which is considered wrong. Taking care of devices. All digital equipment is sensitive and needs to be handled carefully. One should be very careful with suspicious links, messages, or pop-ups, and should open these links carefully as they would be carrying a virus. आप जब यूज़ कर रहे होते हैं इंटरनेट, तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है ना लिंक्स वगैरह आपको भेजे जाते हैं, जो है ना उसमें मुख्तलिफ लिंक्स या मैसेजेस आते हैं या कुछ पॉपअप मैसेजेस आते हैं, तो हर एक को आपने खाम खा से ओपन नहीं करना, बिकॉज उनमें से कई ऐसे होते हैं कि जिसमें कुछ शरारती लोग जो होते हैं, द बैड पीपल, वो दे प्रिपेयर वायरस और उन मैसेजेस में वायरस भेज देते हैं, जिससे आपके कंप्यूटर्स की हार्ड डिस्क वगैरह ख़राब हो सकती हैं. ठीक है. Assessing safe websites. The internet is a storehouse of information. डिजिटल सिटीजन शुड यूज़ ऑथेंटिक. ऑथेंटिक का मतलब होता है जिस चीज़ को पहले एक दफ़ा चेक किया गया हुआ हो, किसी तरीके से जो ज़िम्मेदार लोगों ने चेक किया हुआ हो, तो उसको चीज़ को बोलते हैं ये दिस इज़ ऑथेंटिक. एंड ट्रस्टेड वेबसाइट्स ओनली. इंटरनेट जो है ना, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी मालूमात हैं, तो डिजिटल सिटीज़न जो है ना, वो सिर्फ उनको चाहिए कि ऑथेंटिक वेबसाइट जो होती हैं उनको यूज़ करें. देर आर सम वेबसाइट्स दैट लेट चिल्ड्रन मेक फ्रेंड्स ऑनलाइन. कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं कि जो इजाज़त दे देती हैं जो है ना कुछ बच्चों को भी कि वो अपने दोस्त बना लें. ओनली द वंस दैट आर मॉनिटर्ड एंड मॉडरेटेड शुड बी यूज्ड. आपको सिर्फ वही वेबसाइट यूज़ करनी चाहिए जो मॉनिटर की जा रही हैं आपके पेरेंट्स की तरफ से, या जो है ना जो ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं. Personal information and photograph must never be shared online unless one's parents are aware of it. आप कभी भी अपने बारे में मालूमात है इंटरनेट पे लोगों से शेयर नहीं करनी है आपने, या अपने वालदैन से, पेरेंट्स से परमिशन लेके करनी है. अदरवाइज यू मे लैंड इन ट्रबल, समबडी मे डू समथिंग रॉन्ग विद यू. द बेस्ट प्रैक्टिस इज़ टू यूज़ द इंटरनेट अंडर एन एडल्ट सुपरविजन. बेस्ट तरीका ये है कि जब आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो कोई ना कोई एडल्ट आपके पास होना चाहिए. ये देखिए यहाँ पर कहा हुआ है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फेस चेक एंड गिव ड्यू क्रेडिट वाइल यूजिंग अ पासिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट. यानी ये बहुत अच्छी बात है कि जब आप किसी को इंटरनेट पे आप जो है ना इंफॉर्मेशन पास कर रहे होते हैं, तो उसको पहले चेक कर लेना चाहिए कि वो आपकी इन्फॉर्मेशन जो ठीक है कि नहीं. कई दफ़ा आप गलत चीज़ अगले को बताते हैं, वो अगला वही गलत चीज़ किसी और को बताता है, और फिर से क्या होता है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है. रिस्पेक्टिंग कॉपीराइट. इट इज़ इलीगल टू यूज़ समवन एल्सेस वर्क फॉर योर ओन यूज़. किसी दूसरे का काम जो है ना इंटरनेट से चोरी करके आप अपने इस्तेमाल में अगर ले आए, तो इट इज़ वेरी, ये गैर कानूनी है, इलीगल है.
अनलेस परमिशन हैज़ बीन ग्रांटेड फॉर इट, कि यानी अगर आपको इसकी इजाज़त दे दी है उसने जिसने बनाया हुआ है तो फिर तो मसला कोई नहीं। जैसे हमारी वीडियोज़ हैं, हम इजाज़त देते हैं कि आप लोग इस्तेमाल कर सकें और अपना फ़ायदा कर सकें। सो इट इज़ लीगल टू यूज़ आवर वेबसाइट, बट देर आर सम वेबसाइट्स जो विच डू नॉट अलाउ यू टू यूज़ देयर इंफॉर्मेशन। इट इज़ इक्वलेंट टू स्टीलिंग, ये चोरी करने के बराबर है। द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन शुड बी एक्नॉलेज्ड दैट आर when you use data and information, you should give a reference link www.gov.pk or www.encyclopedia.com or www.oup.com.pk etc. आप अगर किसी गवर्नमेंट के या किसी सोर्स से अगर कोई चीज़ कॉपी कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप उसका सोर्स जो है उसका लिंक ज़रूर दें उसके एंड पे, ताकि ये ऐसे ना महसूस हो कि आपने ये चोरी की है। आप ये कहें कि जी ये डाटा अवेलेबल था और इट इज़ ओपन फॉर एवरीबडी, सो आई हैव गैदर्ड दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर एंड शेयरिंग विद समबडी, राइट? Do you know checking accuracy on the internet is important because anyone can post एनीथिंग दे वांट। देखें, आप कोई लोग अपनी मर्ज़ी की जो मर्ज़ी चीज़ पोस्ट कर देते हैं, इसलिए आपको ज़रूर चेक करना चाहिए कि उन्होंने ठीक बात कही है कि नहीं। द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन पाकिस्तान इन 2016। पाकिस्तान में कानून बना दिया गया कि अगर कोई बंदा गलत इंफॉर्मेशन आगे पास किया जाएगा तो उसके ख़िलाफ़ जो है ना गवर्नमेंट जो है उसको सज़ा दे सकती है। ठीक है जी। सो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल वाइल taking some information from internet and without authenticating passing it to others। ये तो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है ना कि अगर आप किसी से कोई बात सुने और उसकी तहकीक किए बगैर या उसको वेरीफाई किए बगैर आगे पहुंचा दे तो आप तो फिर झूठे हुए। ठीक है, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ करे, कुछ इस तरह है उस हदीस का मफहूम। तो इसी तरह से इंटरनेट से जब कोई अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसको जब तक आप वेरीफाई ना कर लें कि पेरेंट्स के साथ या दूसरों से डिस्कस करके, उस वक्त तक दूसरे बाकी लोगों को ना बताएं, वरना लोग जो होता है कई दफ़ा मिसगाइड हो जाते हैं। ओके ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट थिंग इज़ केयर विद साइबर बुलिंग। केयर विद साइबर बुलिंग, कोई शख्स अगर आपको इंटरनेट पे अगर आपको तंग कर रहा है तो उसके कैसे ख्याल करना है। व्हेन साइबर सिटीजन्स इंटरेक्ट विद ईच अदर थ्रू चैट रूम्स, ब्लॉग्स एक्सेट्रा, दे शुड बी केयरफुल अबाउट द लैंग्वेज दे यूज़। कई दफ़ा क्या होता है कि जी हम इंटरनेट पे जब जाते हैं तो हम कई दफ़ा ब्लॉग्स या कुछ इस तरह की चीज़ें करते हैं या चैट रूम्स में जाके जो है दूसरों के साथ गपशप करते हैं, तो उसमें हमें बड़ा अपनी लैंग्वेज जो है ना उसको बड़ी जो है ना अदब रखनी चाहिए, उसमें रिस्पेक्ट होनी चाहिए। वट एवर द लैंग्वेज द वर्ड्स वी यूज़, दोज वर्ड्स शुड बी रिस्पेक्टेबल वर्ड्स, राइट? फोटोग्राफ्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन मस्ट नॉट बी शेयर्ड विद अदर्स विदाउट परमिशन। अगर आपके पास किसी की फ़ोटोग्राफ्स हैं तो या उसके बारे में मालूमात हैं तो दूसरों के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए आपको इंटरनेट पे, स्पेशली जब तक वो खुद इजाज़त ना दे दे। ठीक है जी। रूड कमेंट्स मस्ट नेवर बी मेड, जो है ना तो गुस्ताखाना जो जो कमेंट्स हैं वो कभी नहीं देने चाहिए। साइबर बुलिंग शुड बी एड्रेस्ड बाय रिपोर्टिंग इट। अगर कोई शख्स आपको इंटरनेट पे तंग कर रहा है तो उसकी आपको रिपोर्ट करनी चाहिए। गवर्नमेंट के पास बाकायदा एक इसका आपकी वेबसाइट है जिस पे आप यू कैन गो एंड रिपोर्ट अगेंस्ट यू। योर ओन एंड अदर पीपल्स प्राइवेसी मस्ट बी प्रोटेक्टेड। The privacy of your privacy and the privacy of others should be respected. Users should be respectful to others and in return demand respect for themselves. You should behave and respect others on the internet, and in the same way you should also demand respect from others also, right? Arguments should be avoided and difference of opinion must not lead to use of foul hurtful language। आपको जो है ना कोशिश करनी चाहिए कि खाम खा की बहस जो है ना वो ना करें, और उसमें यह है कि अगर आप लोगों का इख्तलाफ राय हो जाए यानी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए तो यू शुड नॉट यूज़ फाउल लैंग्वेज, पर बुरी ज़बान नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, या दूसरों का दिल जो है ना तोड़ने वाली हर्टफुल लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। इट वुड बी वाइज टू टर्मिनेट सच कन्वर्सेशंस एंड इफ़ नेसेसरी टू ब्लॉक द पर्सन हु इज़ रूड एंड नास्टी। अगर ऐसा कुछ हो जाए ना तो आपके सबसे बेहतर होता है कि आप उसको उस चैट ग्रुप से निकल जाएं। ठीक है, या उस चैट को ख़त्म कर दें और
जो है ना आपको जो है ना उस बंदे को ब्लॉक ही कर देना चाहिए कि जो आपके साथ नास्टी है, मिसबिहेव कर रहा है, राइट? चिल्ड्रन मस्ट इन्फॉर्म देयर पेरेंट्स और टीचर्स इफ़ दे और देयर फ्रेंड्स आर बुलीड और हरास्ड ओवर द इंटरनेट। आपको अपने पेरेंट्स से टीचर को फ़ौरन बताना चाहिए कि अगर आप लोगों को कोई तंग कर रहा है इस पे, इंटरनेट पे, ठीक है? ओके, नाउ वी विल गो ओवर टू द एक्सरसाइज पार्ट। Okay, friends, now we go to our famous thing, learning checks. List at least 5 civic and political rights and responsibilities. As you know that with the rights, there come the responsibilities. I have tried to list down those rights uh, for which you have the responsibilities also, right? So, political oblique civil rights and political oblique civic responsibilities. Number one is everybody has got a right to vote, but at the same time, what is the responsibility in this regard? That show commitment to democracy by casting a vote. If you have a vote, then you must cast it, right? Then political or civic right is right to a fair trial. Then your responsibility is give honest statement under the law. Once you appear in the court of law, you should give a honest opinion or honest statement, right? Then the security of your dignity. You should be given the security of your dignity. आपको इज्जत मिलनी चाहिए, but यू मस्ट रिस्पेक्ट अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। आपको दूसरों का भी राय का एहतराम करना चाहिए और दूसरों की रिस्पेक्ट और डिग्निटी का एहतराम करना चाहिए। देन इज द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, दैट यू शुड बी अलाउड टू मूव एनीवेयर। देन इन द सेम रिगार्ड शो डिसिप्लिन ऑन रोड्स बाय ओबेइंग ट्रैफिक रूल्स, कि यानी आपको आज़ादी तो है जहाँ मर्जी घूमें, मगर ये नहीं है कि आप जाके सड़कों पे रश डाल दें और लोगों को तंग करें, राइट? देन इक्वलिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स, तमाम लोगों को बराबर ट्रीटमेंट होना चाहिए, मगर यह कि टू बी अवेयर ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स एंड वर्क फॉर देयर सॉल्यूशंस। मगर आपको अगर आप सबके बराबर अपना हक मांगते हैं तो आपको दूसरों के हकूक़ या दूसरों की प्रॉब्लम्स का एहसास होना चाहिए और अपने माशरे की या सोसाइटी की वेलफेयर के लिए यू मस्ट वर्क उनके हल के लिए, राइट? सो इफ़ यू वांट द इक्वलिटी ऑफ ऑल सिटीजन, you should be aware of the social problems and work for their solutions. ये 5 हैं, बड़ी इजी हैं, ये 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बड़ी इजी हैं। अगर आपस में इनको मैच करके आप याद करें तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। So the next question is list the ethical principles of being a cyber citizen. We just don't have to explain, we just have to list. So we'll just name the ethical principles that have been given in our this chapter, right? First is that managing time, second is taking care of the devices, third is assessing safe sites, and fourth is केयर विद साइबर बुलिंग, राइट? ये तो आपने पढ़ ही लिया ना कि हाउ डू यू मैनेज टाइम, देन हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर डिवाइसेस, एंड यू मस्ट एक्सेस ओनली द सेफ साइट्स, एंड यू मस्ट नॉट बॉदर टू be in the company of the people who are trying to bully you, okay? Now again we have a question that write at least 3 of your responsibilities at home, school and community. I have tried to find a similarity in the responsibilities at your home, school and community. That at home you should be polite with family members, at school you should be polite with your colleagues, and with community we should be nice with your neighbors, right? Then at home cooperate in household work, then at school you should cooperate with your colleagues in doing different tasks given to you by your teachers or in a playground even. Then in the community you should participate in the community works. Then at home be honest, at school be honest, with community be honest, because honesty is the best policy, right? So these are the 3 things which are, I think, very important. You may add or delete anything, and you are welcome to do any addition or deletion in these things. This is just a guideline that I'm trying to give you, okay? ओके जी, नेक्स्ट आपके जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि वाई डू यू थिंक वी मस्ट एक्ट रिस्पॉन्सिबली एज डिजिटल सिटीजन। जब वंस वी आर ऑन द इंटरनेट,
तो हमें रिस्पॉन्सिबली क्यों बिहेव करना चाहिए, ठीक है ना। हमें तो कोई किसी को जानता भी नहीं है इंटरनेट पे, हम तो ना कोई हमारी तस्वीर देख रहा होता है ना कुछ कर रहा होता है, तो हमें क्या क्यों करना चाहिए। ये इसके बड़े अच्छे रीज़न्स हैं। हम चलें डिस्कस करते हैं, थोड़े से मैं लिस्ट डाउन करता हूँ। आप इसमें मज़ीद ऐड और डिलीट भी कर सकते हैं, कुछ आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट भी हो सकता है, बट मैं सिर्फ आपको एक गाइडलाइंस ही देता हूँ। Internet is just like a global community. We have to behave like a responsible person showing the civic responsibilities. If we will not follow the cyber ethics, there will be chaos. We can benefit from international community by respecting and cooperating with them. ठीक हो गया जी, वेरी इजी। कि इंटरनेट इज जस्ट लाइक अ ग्लोबल कम्युनिटी, वी नीड टू बिहेव लाइक अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन शोइंग द सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इफ़ वी विल नॉट फॉलो द साइबर एथिक्स दे विल बी केओस। हम अगर इंटरनेट पे कोई बंदा भी रूल्स फॉलो ना करे, एथिक्स फॉलो ना करे, तो अजीबो गरीबी इंटरनेट पे तो ऐसा केओस होगा, अफरा तफरी होगी, कोई शख्स किसी की बात नहीं मानेगा, तो कोई फ़ायदा एक दूसरे से नहीं उठा सकेगा। एंड वी कैन बेनिफिट फ्राम इंटरनेशनल कम्युनिटी बाय, वी कांट benefit from international community by respecting and cooperating with them. Yani, I'm sorry, we can benefit from international community by respecting and cooperating with them only. ठीक है जी। हमने अगर लोगों से, दुनिया जहान के लोगों से या अपने इर्द गिर्द के लोगों से नेट के ज़रिए अगर हमने बिहेव नहीं किया, तो हम उनसे कोई फ़ायदा भी नहीं उठा सकेंगे। ओके, सो आई होप यू लाइक अवर लेक्चर्स। अगर आप लोगों को हमारे लेक्चर्स पसंद आए तो हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप हमें वीडियोस को हमारी पसंद कर रहे हैं तो लाइक कीजिए, और दूसरे दोस्त भी जो हैं जो उनको प्रॉब्लम हो रहा है, इनके इंशाल्लाह अभी हम ये रेगुलरली जो है ना ये वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, तो दूसरे दोस्त जिनको प्रॉब्लम हो रहा है उनको साथ ये शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। अभी हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।